Hope you are doing well. So, are you ready to take your C coding skills to the next level? Well, you have come to the right place. In this video, I will be showing you some of the most important concepts and techniques you need to know to become a C programming pro. So, let's get started. There are basically four aspects of any language. They are कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज किस तरीके से डेटा स्टोर कर रही है, वो कैसे डेटा पर काम कर रही है, वो किन स्टेटमेंट से इनपुट और आउटपुट बता रही है और कैसे वो आपको डेटा का एग्जीक्यूशन मतलब किस वे में हमारा डेटा चलेगा उसे हमें कंट्रोल करने देगी. In this video, our main motive is to go through the concepts of C. So, C was first developed at A.T. and T's Bell Laboratories in USA 1972 by Dennis Rich. Learning C language is almost the same as learning English language. जैसे हम इंग्लिश में पहले अल्फ़ाबेट्स डिजिट सीखते हैं, वैसे ही इसमें हम अल्फ़ाबेट्स डिजिट और कई सारे स्पेशल सिंबल्स के बारे में स्टडी करते हैं. जब इंग्लिश लैंग्वेज में यही अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस. सेम इसी तरह सी में अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होकर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स बनाते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स. Constants are also known as literals. वो जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. कॉन्स्टेंट दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स. प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स को हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 0. Real constants, for example 1.0, 2.3, and character constants, for example small a, capital A, ampersand. C is a case sensitive, hence small a and capital A hold different SI value, and on character constants we must always use the inverted quotes which must always be pointing towards left. Now, there are different ranges of constants which you don't need to learn cause it varies from compiler to compiler. The real constants are further divided into fractional and exponential constant. When value is too big or too small, we use exponential constant. एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इस तरह से दिखते हैं 3.42e4. इसको हम 3.42 इंटू 10 पावर 4 बोलते हैं. यहाँ 3.42 मांटेसा होता है और 4 हमारा एक्सपोनेंट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर्स. वो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं. हमारे कंप्यूटर मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कुछ सर्टेन डेटा स्टोर करते हैं. उन ब्लॉक्स को हम नेम देते हैं वेरिएबल्स. यहाँ ए और बी हमारे वेरिएबल्स हैं. कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं वेरिएबल नेमिंग के. तो सबसे पहले वो केस सेंसिटिव होते हैं. देन हमारे वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होने चाहिए. वेरिएबल नेम में कोई भी सिंबल अदर देन अंडरस्कोर या ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं. ये जो डेटा वेरिएबल्स स्टोर करते हैं उसका मैंने यहाँ चार्ट विद देयर साइज इन बिट्स प्रोवाइड कर दिया है, दो इट्स नॉट नीडेड टू लर्न. नेक्स्ट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर. अगर हमारे वेरिएबल इन टाइप है देन %d का यूज़ करते हैं. फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए %s का यूज़ करते हैं. एज ऑफ नाउ जस्ट कीप इट इन माइंड. जब हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे होंगे यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ एंड व्हाट टू यूज़. नाउ लास्ट इज कीवर्ड्स.
कीवर्ड्स वो स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। अगेन इनकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, सो यू कैन गो थ्रू इट वंस। ओके, सो लेट्स नाउ क्रिएट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम on calculating the simple interest by taking the principal value from user. So at first include, this is a preprocessor directive. Then we will be calling our library stdio.h in angular brackets. Next, the form or structure of C. So all the statements over here must be in lowercase letters. Now we are calling our function main. It is a container set of statement, and as it is a return type function, it always returns an integer value. Then parenthesis. Next we will put curly braces. Now in curly braces we will be writing our statements. See, you can write the statements anywhere, and hence C programming has also been given a special name, a free form of language. Okay, so our first statement is float p, n, r, si, and then semicolon. This semicolon is our statement terminator. Over here, float means the same as real values. Okay, so as real includes 1.0, 3.2, or something which includes a decimal, are all included in float as well as in real. It's another name for real. Next, here p, n, r, and si are our variables. Now for taking value of p from user, write the statement printf in the inverted quotes, which will be in the parenthesis. Write enter p and then at last semicolon. Then an output statement scan f in the parenthesis in the inverted quotes %f, as we have used the float value, then comma ampersand. Over here ampersand is known as the address of operator. Okay, next is p and then at last semicolon, and then हम लिखेंगे simple interest का formula. So it is SI equals P into N into R divided by 100. Next, I am passing the value of N as 3 and R as 8.5. Now, another statement, print F in the parenthesis, then in inverted quotes, simple interest is, and then I will be putting %f for taking the output, and then after that a comma and then si, then semicolon and close it. Don't worry about what is printf, scanf, input and output statement would be made clear to you just within few minutes. Calm down and just keep going. Now at last return 0. See, हमारा मेन फंक्शन इंटीजर टाइप है, इसलिए अगर सब सही रहा तो वो 0 रिटर्न कर देगा. अदरवाइज कोई भी दूसरा इंटीजर, यूजुअली इट इज़ 1, and these 0 and 1 are not visible to you on the output screen cause it is a computer language stored in RAM. 0 usually indicates success. Let's run this. So here, let's first enter our first principal as 1000. So got the value of simple interest. अब मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखी थी,
Calculation of simple interest. ये क्या है? It is a comment statement. Let's study about this now. तो कमेंट सबसे पहले तो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती. इन्हें हम सिर्फ ताकि यूज़र को प्रोग्राम समझ में आए आसानी से इसलिए हम यूज़ करते हैं. अगर कई सारी स्टेटमेंट्स वाली कमेंट्स हो देन हम स्लैश स्टार देन उसके अंदर हम अपना कमेंट डालते हैं देन स्लैश स्टार से इसे क्लोज कर देते हैं. और अगर कोई सिंगल लाइन वाली कमेंट हो देन डबल स्लैश का यूज़ करते हैं. That's it. You need not worry about what is comments because all what I have told you is damn sufficient. Now coming towards output and input statement. So at first output statement का यूज़ हम output screen में कोई भी statement print करवाने के लिए करते हैं. Let's now see how it actually works. तो हम यहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड. तो उसके लिए वी विल पास द कोड प्रिंट एफ ब्रैकेट्स ओपन देन डबल कोट हेलो वर्ल्ड देन डबल कोट क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन विल पुट द सेमीकोलन एंड आवर वर्ड हेलो वर्ल्ड गॉट प्रिंटेड. अब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड को 4 बार अलग अलग लाइंस में प्रिंट करवाना है सो व्हाट शैल आई डू नाउ? It's very simple. Use \n just before ending the inverted quotes and now just copy it to how many times you want it to get printed. Let's run it. So we got our desired result. So done with the output statement. Now let's see what इनपुट स्टेटमेंट सेज. इसका यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवानी हो. लेट्स चेक दिस आउट बाय कोडिंग एन एग्जाम्पल. सो हियर आई एम टाइपिंग माय कोड विच इज़ int age is our variable which I have specified at the first. Then in the second line I want the enter age letters to get printed over the screen. So I am using printf enter age. Now I want to get the input from the user. For that I am using the statement scanf in the brackets %t which will be in the double quotes then comma then ampersand and then our variable which is age. Now I want the result to get printed. For that I am writing another statement printf in the brackets again in the double quotes age is %d then after a double quotes put a comma and then age. That's it. Now let's run it. So yeah, here we have our result. Let's give the value of age now. Yeah, done. So that was all about output and input statement. Finally coming towards compilation and execution. So compilation is basically a computer program which converts a C code to machine code. Cause computer only understands the machine code, hence this is a compulsory procedure. Now coming towards our next important topic, instructions. Instructions means statements in a program. जो अलग अलग स्टेटमेंट हम while कोडिंग लिखते हैं उन्हें हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. एंड ओवरऑल these set of instructions make a whole program. Now types of instruction. There are basically 3 types of instruction: type declaration, arithmetic and control instruction. First one, type declaration instruction. As the name suggests, it declares the type of variable. The statement int a equals 25 declares that
A is of integer type. Hence, this is a type declaration statement. Now, there are 2 points while using this instruction. First one is always first declare the variable before using it. मतलब अगर हम सपोज int b इक्वल्स 25 प्लस a के बाद int a इक्वल्स 25 वाली स्टेटमेंट पास करते हैं, so as you can see it will show error. So now let's first declare our variable int a equals 25. Then int b equals 25 plus a. Now it's the perfect statement and अब कोई error नहीं आएगा. Next important point is simultaneously declare and use करना is not allowed. मतलब if I am writing int a equals b equals c equals 1, then this will be showing error cause हम at the same time a b c को integer type भी declare कर रहे हैं and then a b c की value 1 है उसका भी use कर रहे हैं, which is not allowed. So let's first fix this. First, let's declare the variable int a, b, c. Then pass the value of a equals b equals c equals 1. Yes, done with this. So that was all about type declaration. Now, arithmetic instruction. It means the instructions which include mathematical operators like plus, minus, multiplication, division and modulo operator. About these operators we will be studying in next video on operators. Over here a and b are operands and a is operand 1 and b is operand 2 and plus is our operator. The point to be noted here is that there must be a single variable on LHS. If I pass the statement int x comma y is equal to a plus b, then x को हमने यहाँ सिर्फ declare किया है कि हाँ it's one of the integer and the value of a plus b would be given just to y and not to x. Hence, always use a single variable on LHS. हम कई बार normally multiplication के लिए a equals b c लिख देते हैं, but this won't work when it comes to C coding. And the last key point is हम अगर कोई पावर निकालना चाहते हैं then c equals a raised to power b का यूज़ करना is invalid. But हाँ, this won't show any error because it's a operator but not a power operator. It's a XOR operator जो हम bitwise या boolean calculations में use करते हैं. So for power, write a statement int power is equal to POW in the brackets b comma c then semicolon. And हम एक function को भी call कर रहे होंगे which is include in the angular brackets math.h. Now integer and float conversion. तो C अगर int और int का ऑपरेशन होगा then int वैल्यू ही एज अ रिजल्ट आएगी. अगर फ्लोट और फ्लोट का हुआ तो फ्लोट आएगी, बट इफ़ अगर फ्लोट और int का हुआ then फ्लोट ही एज एन आंसर आएगा, क्योंकि एज फ्लोट का बिट साइज
4 होता है ऑब्वियसली ग्रेटर देन इंट बिट साइज 2। और अगर हम लॉजिकली देखें तो किसी बड़े डब्बे में छोटी या बड़ी दोनों चीज़ें डाली जा सकती हैं, बट किसी छोटे डब्बे में सिर्फ छोटी चीज़ ही डालनी पड़ेगी। Hence, the answer which we will receive will be in float form. Now, our next topic is modulo operator. ये ऑपरेटर बेसिकली 2 डिजिट्स को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसे एज एन इनपुट प्रोवाइड करता है। हाँ, देयर इज़ वन की पॉइंट अबाउट दिस। सी, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव होगा तो हमारा आउटपुट मतलब रिमाइंडर भी पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली इट गोज़ फॉर नेगेटिव। मॉड्यूलो ऑपरेटर जस्ट वर्क्स फॉर इंटीजर वैल्यूज़। अब आ जाते हैं हायरार्की ऑफ प्रेसिडेंस पर। हमने अभी तक कई सारे ऑपरेटर्स देखे हैं। नाउ लेट्स सी, जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आएगी तब हमें कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, देन प्लस, माइनस एंड देन एट लास्ट equals an assignment operator. Now, what is associativity rule of operators? So, what if अगर कभी in a same statement सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हुए तब हम कौन सा पहले सॉल्व करेंगे। ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन एसोसिएटिविटी रूल। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट में जो भी ऑपरेटर हो उसे सॉल्व करो, देन राइट की ओर बढ़ते जाओ, दैट्स इट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा इंट ही फ्लोट की वैल्यू को स्टोर कर ले या वाइस वर्सा हो जाए, मतलब फ्लोट इंट की वैल्यू को स्टोर कर ले, तब it's possible. Let's see what happens in this type conversion. अगर int में float value डाली, for example I equals 3.5, तो वो डिमोटेड हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटाकर आउटपुट में सिर्फ 3 एज ए रिज़ल्ट पास कर देगा। सिमिलरली अगर फ्लोट को मैंने कोई इंट वैल्यू दी, सपोज f इक्वल्स 30, तो वो अब होगा प्रमोट और हमें 30.0 एज एन आउटपुट दे देगा। नाउ फाइनली कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन हमारी हेल्प करती है डेटा फ्लो को स्टोर करने। There are basically 4 types of control instruction. First one is sequence control. This ensures जो भी हमारी instructions हैं वो सेम ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो जैसे कि वो प्रोग्राम में दिख रही हैं। Then decision or selection control. This includes if-else statement. Then case control. They allow computer to take decision as to which instruction to execute. And now the last one is loop or repetition control. This helps to execute group of statement collectively and repeatedly. So that was all for this lecture. We will be covering the leftover topics in the upcoming videos. Hope I was able to share my knowledge successfully with you. So, if yes, then we'll be seeing you in the next lecture of C programming. Until then, keep on practicing. Thank you.